हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जब हम स्टेज पे जाएंगे और हमारे हाथ में अवार्ड होगा तो हम क्या स्पीच देंगे, हम क्या बोलेंगे। पर ये तो बात की बात है ना, हम ये नहीं सोचते कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, हाथ में अवार्ड पाने के लिए हमें कौन सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ये सोचना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एंड आई गेस वो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है ये आपका डेस्टिनेशन, द स्मार्ट क्लिक। तो आपको ज़रूरत है हमारे शो पर आने की, जहां आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे आपके ही फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड दर्शन दीक्षित। Darshan Dikshit, an international fashion photographer who has redefined glamour and style. A photographer who works with international brands which has a desi heart who loves life and energy. Photography is not just his profession, it is his love affair with lights. The Smart Click is a search of this restless photographer who is in search of a photo of his lifetime. So friends, let's welcome Darshan Dikshit. वेलकम दर्शन। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलते हैं और इतनी सारी नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है हमें। तो अब हम बात कर रहे थे स्वीटी के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उनको आपने एक यूनिक एथनिक वेयर दिया था, एंड दिस टाइम ऑन हर नेक्स्ट लुक यूड गिवन अ बिकनी शूट। तो ये सब आपके दिमाग में कैसे आया? हाउ डिड दिस बिकनी पोज केम इन योर माइंड कि उन पे सूट करेगा या उनको ये पहनना चाहिए? See, I'll tell you, Sweetie has really a good body. Okay. Good curves and bikini leg body. Right. You cannot really have bikini on everyone. कोई भी bikini shoot करेगा तो vulgar दिखेगा वो. Right. Yeah. Right. But first, Sarika knows her body very well. उसने अच्छे से bikini carry भी कर पाई थी वो, और उस पर अच्छी भी लग रही थी because of her body language. So yeah, bikini shoot was one of the changes that we gave her, and she carried it very well. एंड आई एम श्योर उनको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं रही होगी शुरू में, जैसे लाइक वी टॉक्ड अबाउट द अदर मॉडल ऋतु, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा वो हिचकिचा रही थी। आई वोंट से प्रॉब्लम था, थोड़ी सी कंसर्न थी जो दूर हो जाती है। एंड सारिका तो कोई कंसर्न नहीं थी बिकॉज शी इज क्वाइट मैच्योर, शी हैज सीन द इंडस्ट्री इन एंड आउट एंड शी अंडरस्टैंड्स के क्या जरूरत है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। या एग्जैक्टली, यू नीड टू हैव बोल्ड लुक्स एज वेल, especially if you're inclined towards modeling more than acting. Yeah, so right. It's very important. You have to have a bikini look. So you could understand कि उनका complete focus is on modeling rather than acting. I wouldn't say her complete focus, but then yeah, she is more inclined towards modeling. She's also interested in acting, and looks like she's gonna get a movie very soon. Oh, is it? Yeah. So friends, did you see कि कितनी ब्यूटीफुली दर्शन ने सारिका के अंदर छुपे उस टैलेंट को पहचाना और उनके एक्स फैक्टर को हम सबके सामने दर्शाया। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं? This is the right time. Give yourself a chance. So दर्शन, अब let's talk about another look जो आपने सारिका को दिया। इस लुक में आपने उनको वेस्टर्न आउटफिट पहनाया था, which is like a one piece dress. तो ये कैसे आपके दिमाग में आया? Why a western? Because unlike अभी तक आप जो करते आ रहे हैं, which is very unique, कुछ ना कुछ आप डिफरेंट कर रहे थे, and I guess one piece was in trend and was very common, which even others might be doing. तो ये कैसे आपने सोचा one piece के लिए? See, it's less about my experiments and it's less about my fun, and it's more about giving her a good folio, and it's more about giving her a complete folio. Right. Now, if we talk about complete folio, there are certain things that are mandatory. There are certain things that should be there in your folio if you are from, you know, particular background. Say जैसे ऋतु थी या कोई भी ex model थी, we gave her traditional looks. The reason being they were inclined towards modeling and acting both. But over here, Sarika is damn sure that she wants has to be a model. Yeah, she's more inclined towards modeling. Right. Yeah. So basically, I thought of giving her all Western looks, and I did not give her any Indian look as such. Yeah. So Western outlook was a look that I decided her for. There were two reasons. One, it was mandatory. Second reason, I wanted to give her a bubbly look.
Yeah, I could see a bubbly That Sarika, charm in her, and yeah. a charm in her. So you basically want that bubbliness to come out, and Exactly. Yeah. So that was one of the reasons we gave her a Western outfit. Okay. And the funny part was we asked her to play with a teddy bear, and yeah. that was I did very see that. bubbly and very cute, and very Very much like Sarika. exactly. Okay. So that was the fun. Yeah. Wow. So I must appreciate that you think a lot on that. Is it? And as a photographer, it is very important to before executing things, it is important कि आप उसमें deeply सोचें, study करें जो आप usually करते हैं. See, I'll add one more thing to it. There are photographers or there are people who, see the location, they go outdoor, they go indoor, and then they think about it. But then what I normally do is when I study a subject or when I study a model, I have certain looks in my mind. Oh, okay. And I make sure that I get those looks. Okay. So sometimes it's really difficult if you're shooting outdoors, because in outdoors there are a lot of things that are not in your hand. Right. But then it's fun to have things that you always want, or to have something which you want rather than having something which is just And good I'm and sure you pick you've it had up. a lot of fun. And our I models always also. have fun. Because Darshan, now this is another episode. I mean, this is one of the episodes. I'm still waiting since 4 episodes. You have to tell me, what did you study about me? You have to tell me, yaar, what will suit on me? अब बहुत हो गया यार. कब से I'm waiting. Now you have to answer. You have to answer. Looks like I would have to tell you the secret now, huh? You won't छोड़ोगी नहीं मुझे वैसे, हाँ? बिल्कुल नहीं, मतलब इतना वेट तो मैंने कभी नहीं किया किसी चीज के लिए. कितने एपिसोड्स हो गए यार, प्लीज. Alright, so I guess it's time to tell you the secret now. Yes. But first let's see how Sarika is looking in her bubbly look, yeah? Okay. तो देखा आपने दर्शन कितने प्यारे तरीके से सारिका के अंदर छुपे उस इनर चार्म को हम सबके सामने बाहर लेकर आए, और वो उस पोज में कितनी क्यूट और बबली दिख रही थी. पर क्या बात है ना, मैं तो बहुत नाराज हूँ. मुझे अभी तक ना आपने बताया नहीं है, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट सीक्रेट, एंड आई नीड टू नो यार. मतलब Right. 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 5 एपिसोड से वेट कर रही हूँ. प्लीज यू हैव टू टेल मी नाउ. Acha, looks like I would have to reveal the secret now. Absolutely. See, the truth is there's no secret as such. It's very basic and simple. People think कि ये कपड़े मुझ पे अच्छे लगते हैं, या ब्लैक कलर अच्छा लगता है, या गाउन अच्छा लगता है, या whatever, साड़ी अच्छी लगती है. The truth is, clothes actually don't justify you. You justify clothes. If you're wearing a sari and if you're able to handle the sari well, then you look good in a sari. If you're wearing a dress, if you're wearing a one piece, if you're wearing a bikini, and if you if you can handle a bikini well, then bikini would look nice on you, sari would look nice on you. Yeah. So it's you who would have to, learn how to handle clothes, not the clothes. Okay, accepted. Now again the question bounces back on me. What's the question? What did I ask? I asked you कि आप मुझे एक बताइए लुक कि मेरे पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या See, अच्छी you're carrying लगी? this very well. So No, this is a very easy way to escape, huh? Tell me a proper That's the answer. basic simple thing. See, I'll tell you, I don't know, but things are very simple. Things are very basic. But you want me to, give you a complicated answer, then you will probably think that, No, what I just I'm wanted saying to is give you a right. simple dress answer. This looks really nice on you. You're looking really great, right, viewers? She's looking stunning, right? देख लिया ना आपने, जितना इनका दिमाग फोटोग्राफी में और जितना इनका हाथ अपने क्लिक्स में चलता है, उससे ज़्यादा दिमाग इनकी बातों में भी चलता है. पर ये सब जानने के लिए इनसे आपको मिलना पड़ेगा. कहाँ पर? हमारे शो में, डी स्मार्ट क्लिक. थैंक यू सो मच दर्शन वंस अगेन हमारे शो पर आने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में एनलाइटन करने के लिए और इतनी अच्छे थॉट्स बताने के लिए. दैट क्लोथ्स डजंट जस्टिफाई यू, यू जस्टिफाई व्हाट यू वेयर. आई एम रियली अमेज्ड. So do you agree with it? Yes, I do. And I'm sure all our viewers would agree with it.
एंड वी आर स्टिल वेटिंग कि आप हमारे साथ ऐसे ही और टाइम स्पेंड करें और हमें एनलाइटन करें, हमारी नॉलेज इन्हांस करें. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. माय प्लेजर. थैंक यू. यू वेलकम. तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातों के साथ, नए चेहरों के साथ और ज़्यादा नॉलेज इन्हांस करने के लिए हमारे साथ होंगे दर्शन. टिल देन, बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अगर आप में भी वही इच्छा है कुछ कर दिखाने की, अपने सपनों को एक मकाम देने की, तो हमें कांटेक्ट करें. Like, share, subscribe for more such informative videos.